Okay. So we'll discuss the solutions to the test on photosynthesis. Okay. First question: the site of photosynthesis in a plant cell. Okay. You have written as chloroplast. Okay. Some of the students, if they write as chlorophyll or something else like that one, okay, definitely that is not going to be correct answer. Site of photosynthesis chloroplast. The individual flattened stacks of membranous structures inside the chloroplast. Okay. Thylakoids. Here you see this particular question, you have to observe carefully. Individual flattened stacks. If you take this whole as one term, individual flattened stacks, then it will appear to be granum. Okay, but if you take it as individual, okay, what is the each individual of the flattened stack known as of membranous structures? Okay, that is thylakoid. देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, एक है ग्रैनम और दूसरा है थाइलाकॉइड. इन दोनों में से आप कुछ चूज करोगे, बहुत क्लोज है दोनों. ओके. ग्रैनम ग्राना नहीं होगा, ग्राना तो ऐसे प्लूरल है, और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोला इंडिविजुअल फ्लैटेंड स्टैक. ओके, सो इट कैन बी ग्रैनम, बट the answer here is thylakoid because individual membranous stack. Okay, individual membranous structure. Okay, so ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देने के पीछे मकसद ये था कि कंफ्यूजन इस पॉइंट पे हो सकता है. ओके, 3-4 सोर्सेस में ये क्वेश्चन है और thylakoid itself is the answer. Okay, by chance, because these kind of very close questions, okay, may or may not be asked in board exam, I don't know, but we will not take chance. That is why this particular question I discussed in the same, I didn't change the sentence also. Okay, इसमें आप thylakoid लिखेंगे आंसर. Exact location of thylakoid inside the chloroplast. Exact location of chloroplast inside the mesophyll cells. Mesophyll cells, okay, of leaves. The process of conversion of several molecules of glucose into one molecule of a starch, polymerization. The site of light reaction in the cell of a leaf is thylakoid. The splitting of water molecules into hydrogen ions and hydroxyl ions in the presence of chlorophyll and light is photolysis. Photolysis, not photolysis. Photolysis. The process of conversion of ADP to ATP occurs during this phase of photosynthesis. फेज पूछा है, ठीक है, फेज पूछा है तो हम इधर बोलेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज. ठीक. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स दैट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च. यस, क्लोरोप्लास्ट. देखिए कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ के गया हाँ स्टार्च पॉलीमराइजेशन होगा स्ट्रोमा में, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन,
लेकिन क्वेश्चन और ब्रॉड आ गया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, सीधा ऑर्गेनल ही केवल पूछे, सो क्लोरोप्लास्ट। Aquatic plant used in the laboratory to demonstrate oxygen liberation during photosynthesis. Hydrogen. How can destarched leaves be obtained? Keeping them in dark for more 24 to 48 hours. Write the overall reaction for photosynthesis. यहाँ पे हम लोग 12H2O वाला ही लिखेंगे, ठीक है। इधर सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब लिख सकते हो, लिख के C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ओके। यही स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखिए आप। फुल फॉर्म ऑफ NADP, निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड phosphate. The end products of light dependent phase of photosynthesis of photochemical phase. NADPH, ATP, oxygen. Main end products these are. Potassium ion concentration 3 explains the phenomena opening and closing of stomata. All parts of green plant carry out photosynthesis. False. All green parts of a plant carry out photosynthesis. Tell how. नहीं, अगर किसी प्लांट का रूट्स ग्रीन है, कोई प्लांट का रूट ग्रीन नहीं है, हाइपोथेटिकल। हाँ, स्टेम हो सकता है। स्टेम अगर ग्रीन है, ग्रीन इसीलिए है क्योंकि उसमें है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। सो सेकंड वन इज ट्रू। तुम्हारा त्रिशा हम काट दिए हैं, तुम्हारा करेक्ट दे दिए हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा हमारे देखने में ही गलती हो गया। ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यस। नो ट्रांसपिरेशन अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फॉल्स। ड्यूरिंग सनलाइट द गार्ड सेल्स टर्न फ्लैसिड टू ओपन द स्टोमाटा। देखो गड़बड़ क्या किया, फ्लैसिड लिख दिया, टर्जिड टू ओपन द तब ठीक रहता, तो फॉल्स। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर, ट्रू, ओके। ऑक्सीजन is coming by the photolysis of water. During the light independent phase, carbon dioxide from the atmosphere is used to produce glucose, true. The rate of photosynthesis increases with the rise in temperature, true. Starch is the first form of food substance produced during photosynthesis, false. Glucose. NADPH is the compound which stores energy in the cell. I have written as true and false both. Why? NADPH is the compound which stores energy in the cell is true. NADPH will work like ATP to store the energy. ATP is the preferred molecule. हमारे सिलेबस में इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया नहीं गया है। फंक्शन ऑफ NADPH क्या है? It will provide the hydrogen for reduction of carbon dioxide to glucose C6H12O6। ये जो हाइड्रोजन आया कहां से आया? NADPH के पास। NADPH के पास
NADPH के पास H कहां से आया? हाँ, लेकिन वो H आया कहां से? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से H आया, H प्लस। वो H प्लस NADP प्लस में आया, NADP प्लस से ये ट्रांसफर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को इधर। ये जो रिएक्शन है ये कहाँ हुआ? ये रिएक्शन हुआ स्ट्रोमा में, कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज स्ट्रोमा में हुआ। NADPH हाइड्रोजन कहां से मिला? जब वो हाइड्रोजन क्लोरोप्लास्ट से थैलेकॉइड से निकला स्ट्रोमा में, है ना। थैलेकॉइड के अंदर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया था। यहां पे सब क्लोरोफिल है, okay, and this one is the thylakoid. Okay, so inside the thylakoid H plus ion is increasing by the photolysis of water, और जब ये H plus ion बाहर निकलेगा फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, और ये H plus जो बाहर आया वो NADP प्लस के साथ मिलके NADPH बनाएगा। ये NADPH जो है किस में काम आएगा? ग्लूकोज बनाने में काम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिएक्शन तो अब स्ट्रोमा में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में करना। ओके, दैट इज द पॉइंट। कौन? NADPH। NADPH लाइक ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो लास्ट फॉस्फेट है वो हाई एनर्जी बॉन्ड है। उसी तरीके से NADPH का जो फॉस्फेट बॉन्ड है उसमें निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो फॉस्फेट का बॉन्ड है दैट इज नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड में ये एनर्जी स्टोर रहेगा। ठीक, it is true, it is used to store energy in the cell, लेकिन हमारे सिलेबस में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। इसका एक्चुअल जो यूज है ये है कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे हम आपको एक स्टेप ज्यादा सिखा दिए, जानबूझ के आपके सिलेबस से थोड़ा एक स्टेप ज्यादा है, लेकिन आपके क्लैरिटी के लिए, ताकि कॉन्सेप्चुअल आप क्लियर रहें, आपको कोई डाउट ना रहे। नंबर 10, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम वाटर। फॉल्स। अभी हमने देखा इट इज कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इट इज कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉल्स। लाइट एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे हम लोग। ओके, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, और एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सर अल्टीमेटली तो इसका काम तो वही है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया तो वैसे थोड़ी होता है, आपको स्पेसिफिक फंक्शन पूछा गया है, ठीक है, तो उसी के अनुसार जो इमीडिएट पहले आएगा उसके बारे में बताएंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ उसमें, एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, that is loss of hydrogen, formation of oxygen. Chlorophyll in a leaf is required for breaking down water into hydrogen and oxygen. That is photolysis of water. True? False? ठीक, that is point is correct. Okay, chlorophyll in the leaf is required for activation of chlorophyll. Is that correct? What is the use? To capture sunlight. That means that energy from sunlight it has captured for what purpose?
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, ये आप ट्रू लिख सकते हो, लेकिन हम 13 नंबर ट्रू, chlorophyll in leaf is required to break down water into hydrogen and oxygen। हाँ हाँ, क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट है ट्रैप करने के लिए फोटॉन्स को। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा? देखो, क्लोरोफिल का प्राइमरी फंक्शन है टू कैप्चर द सनलाइट, दैट इज कैप्चर द एनर्जी ऑफ द फोटोन। सेकेंड स्टेप इज photolysis of water. Photolysis of water is taking place through electron transport chain, which is not exactly part of the chlorophyll, but it is required for breaking down water into hydrogen and oxygen, that is we cannot rule out. देखो, दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर कीजिए, नंबर 11 और नंबर 13 को। नंबर 11 का क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखिए, द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहां पे क्या बोला, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इफ क्लोरोफिल इज नॉट देयर आल्सो इट विल हैपन, उस तरीके से आएगा। लेकिन यहां पे क्या बोला क्वेश्चन में, स्पेसिफिक फंक्शन, तो दोनों के क्वेश्चन के फ्रेमिंग में फर्क है। तो ऐसे में क्लोरोफिल इन ए लीफ इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन वाटर, एंड यस दैट इज ट्रू, that we will take it as true. Okay, that one you can correct it. Okay, next, the rate of photosynthesis is not affected by carbon dioxide concentration. False. The production of starch is used as a measure of photosynthesis in leaves because starch is soluble in water. False. क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि हमने इसमें बिकॉज स्टार्च इज सॉल्युबल इन वाटर कर दिया। जिसको पता है कि स्टार्च वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो तो सीधा दे देगा, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करें, द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च is used as a measure of photosynthesis in leaves because it is the storage form. Okay, question is glucose versus starch. स्टार्च को क्यों प्रीफर किए? Glucose is used up quite fast. Okay, and if it is not used up so fast, then it will convert into starch, but starch will be available for longer period of time. तो इसीलिए starch is used to measure the photosynthesis. Optimum temperature for photosynthesis 35 to 40. जो ग्राफ लेके चलते हैं तो 30 डिग्री पे मैक्स रहता है। ओके, दैट इज द मैक्सिमम photosynthesis will take place. 25 to 30, 25 का टेम्परेचर सुहाना माना जाता है। देखिए जैसे बाहर का वेदर भी 25 डिग्री वगैरह रहता है तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। ओके, बट यू डोंट फील सो एक्टिव आल्सो, फील स्लाइटली लेजी आल्सो। ओके, 30 इज ऑप्टिमम, 35 सॉरी 35 नॉट 30, 35, फ्रॉम 35 टू 40 इस टेम्परेचर पे बेस्ट रेंज है। अपने टेक्स्ट बुक में रेंज के बारे में उतना डिस्कस नहीं किया गया। And when it goes beyond 40 it will stop. Okay,
तो रेंज आप ये पकड़ के चलेंगे 35 to 40. ओके, रेट गिरना शुरू करेगा. देखिए 25 to 30 जितना इंक्रीज होता है और 35 to 40 जितना ड्रॉप होता है, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ये 35 to 40 का जो रेंज है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिखाई देगा एक्टिविटी. इस तरफ एक्टिविटी है, इस तरफ टेम्परेचर है. ओके, एक्टिविटी बढ़ता गया और 40 पे आके कम हुआ और कम होते गया. तो से फ्रॉम 35 to 40 is optimum range. We will not worry too much about it because exactly ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया और 40 के ऊपर जब जाएगा तो डीनेचुरेशन. We are just touching the border of the syllabus. In Kelvin cycle, 1 mole of glucose is formed from ठीक. Maximum photosynthesis occurs in. अच्छा, हमने शायद व्हाइट लाइट को ओके कर दिया, लेकिन आंसर है रेड लाइट. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड लाइट. व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइट्स. ओके, क्लोरोफिल जो है उसमें आप देखो क्लोरोफिल ए बी सी डी करके दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी है ना. सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल आर बेस्ड अपॉन इट्स lambda max, that is the wavelength at which they show the maximum absorption. The most abundant chlorophyll is chlorophyll A and its lambda max is in the red light region. इसीलिए maximum photosynthesis will occur in the red light. H2 donor during photosynthesis is, ये वाला ज्यादातर स्टूडेंट्स ने सही लिखा, NADPH. Identify the event that doesn't occur in the photosynthesis in the given list. Oxidation of carbon to carbon dioxide does not take place. Chlorophyll is used in photosynthesis for yes, absorbing light. Diagram based question. Draw neat label diagram of chloroplast. Most of the students have drawn okay, no problem. Main mistake you have done is instead of writing granum you have written grana. Okay, this is where your marks will be deducted. You are showing very clearly one stack, no, show like this. Don't simply show like one and say grana, that is wrong. If you are showing only one, then you say thylakoid. When you are showing grana, make this flower bracket and then write the grana, granum. Okay, singular you will write. So this is the major I found mistake most of the students are doing. Otherwise remaining is fine. List the events given taking place in the photochemical phase. यहाँ पे some students have written little bit casually. Okay, write it properly. First step, activation of chlorophyll. Second step, photolysis of water. Write the equation. Then NADP plus plus H plus electron gives rise to NADPH. Okay, and then photophosphorylation. ADP plus PI gives rise to ATP photophosphorylation, like that. Okay, all the 4 ones. And you may also write this one, release of oxygen gas. Okay, 5 steps, 5 things are there in this one. If you are planning an experiment to show the effect of light on photosynthesis, will you select white light or green light? Obviously all of you have written white light. Justify your answer. Okay, 2 ways are there, you will justify. One, you will say negative, that is green light is least absorbed by the chlorophyll, like that you will say. Other one is you will tell white light
contains the different wavelengths of light including red light, which is maximum absorbed by the chlorophyll. Okay, in this both positive and negative ways you can support this answer. Why? See, whenever you see this kind of question, justify, give reason why, read that question 2-3 times, whether you have to answer one point, whether you have to answer both ways, like that. Okay, that makes the difference between 1 mark 0 mark, 2 mark 1 mark. Okay, very carefully you see what is expected in that question. Why would you select a destarched plant before conducting photosynthesis experiments? Another reasoning question. Why you will select a destarched plant? Okay, you have written answers in different ways. Okay, but what is the ultimate? Just give me one point. What is the key thing that you are requiring here? Okay, to remove any carry over starch from before the experiment. Okay, destarch means that you are removing that starch. If we have any, so that may give false positive result. For example, in certain place photosynthesis did not take place, but because you did not destarch it, you will get positive. So to remove any carryover starch before the experiment was performed, okay, to prevent false positive result, like that you can use the two terms. Next, draw a neat label diagram to show that the green plants give out oxygen during photosynthesis. Maximum students repeated the mistake. I told this question always comes in the exam. Okay, every exam it will come. Favorite question. Very easy, no? But at the same time it is very tricky also. So you have made, okay, both of you have made, okay, fine, like this you made inverted funnel, and on that there is a test tube, and then you will show there is water. Labeling should be clear. What water it is? Pond water. Okay, simply if you write water you won't get marks. Okay, because it is not what you say, this distilled water. If you put, you will not get the result. Okay, so hydrilla, most of the students have written this one. Test tube, inverted funnel, and here most of the students have shown bubbles of oxygen, but here you have to show on the top here oxygen, like this, that you have to show that oxygen has got accumulated here in the test tube. And most important, which all the students forget, is this sunlight. So in exam this is 2 marks question. Okay, if you have not made this one, 1 mark will clear detect. Okay, so be careful, don't forget this sun. Give the overall chemical reaction to represent the process of photosynthesis. This one got repeated again, but always remember, write 12H2O. Okay, that equation. The diagram alongside represents an experiment conducted to prove the importance of a factor in photosynthesis. Study the same and then answer the following question. Name the factor being studied in the experiment.
one student simply wrote light. Problem is there, because what is given in the key, in answer key sunlight will be given, here simply written light, casual. So this one thing you have to remember, if you are by any way giving impression to the teacher that you are casual, you are not serious about your writing and okay representing, then it irritates that examiner, and the examiner's mood will change. The examiner wants to deduct your marks at any cost. But if you are writing even wrong thing very neatly, representing properly, human nature, okay, human nature is there, definitely some mercy will come out of it, because it is not a computer that is correcting, that you remember. Okay, so now here what is the factor being studied? Write properly sunlight. Okay, if you are striking off, okay, you wrote something, okay, equation for example, you wrote something and then you are striking off like this something, please avoid it, don't do that. This is another most disturbing thing for examiner. Some mistake is there, with a single stroke strike it off, only with a single stroke you will strike it off. Okay, and then below that rewrite, suppose this is question number 2, okay, this you have written something like this, and now you strike it off. Okay, then what you do, below that again write properly question number 2, and then you write your answer. Okay, after striking it off, down simply you wrote the answer like this, and then you wrote third one like this. Examiner has full freedom to strike it off. Okay, and also your striking was going little bit into the question number 1, something you have written little bit, it went and touched there also. There are different type of examiner. Some fellows are really stingy fellows. No mercy. If such examiner is there, then means you see, now for example, Siddhant wrote 1, okay, he wrote question number 2 something, adenine, okay, nicotinamide dinucleotide phosphate he wrote. Below that he was writing some equation, okay, something, and then what happened, he struck it like this. Okay, and then he wrote down below NADP like this, and then he wrote fourth question like this. Now you see, second question, third question, fourth, okay, like this answers are given. Now this way he struck it off, also went on this adenine part, and this one is somehow, this answer he wrote correct, but it is somewhere, you know, in this part it has gone like this, and then like this double strike is there. ऐसे में एग्जामिनर का पूरा पूरा बनता है कि सेकंड, थर्ड और बहुत मन किया तो फोर्थ को भी उड़ा दे। इसीलिए ऐसे खतरनाक एग्जामिनर से बचने का कोशिश कीजिए। जब भी स्ट्राइक कीजिए तो एक बार स्ट्राइक कीजिए और उसके बाद उसको उसके नीचे नहीं लिखना है। आप भले केवल आंसर स्ट्राइक किए, क्वेश्चन नंबर आप बनाए हुए हैं, आप पूरा स्ट्राइक करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर नीचे लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर के साथ उसको स्ट्राइक कीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर से नीटली आंसर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, वाई वॉज द प्लांट केप्ट इन डार्क बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट? टू डी स्टार्च, एक शब्द का आंसर है। डी स्टार्च व्हाट? द लीव्स। सम पीपल राइट डी स्टार्च द प्लांट, acceptable, no problem, acceptable, but more appropriate will be to destarch the leaves. Why was the experiment boiling water and methylated spirit? Experiment में by boiling water was used. Okay, two ways you can answer this one: to kill the leaves, kill the cells of the leaves. Okay, the other one is to stop further
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, अल्टीमेटली वही ना, सब मर जाएगा तो फोटो। तो ऐसे में क्या करो, हम तो सबसे अच्छा बोलेंगे टू किल द सेल्स एंड स्टॉप द फर्दर एनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। मिथाइलेटेड स्पिरिट तो सीधा आंसर है, टू रिमूव द क्लोरोफिल और टू एक्सट्रैक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स। नेम द सॉल्यूशन यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन करके लिखिए पूरा। What will be observed in the experiment at the end of a starch test? Positive test will be blue black color, negative test will be brown color. Okay, following diagram is there, बहुत सारे बच्चों को इसमें अलग अलग टाइप का आंसर आया। In which tube would you expect the greatest increase in the dry weight of the pond weed? बी नंबर में स्नेल है। स्नेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचाएगा। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो फोटोसिंथेसिस उसमें बढ़ेगा। तो हाईएस्ट जो है इसमें आपको लाइट भी पूरा मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, तो ए आंसर होगा इसमें। इन विच ट्यूब वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द प्लांट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टार्च? हाँ, पहले वाले में, सॉरी, हाँ ए लिखे हम, बी, बी होगा। नहीं, बी 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 हम गलती से लिख दिया। इधर तो जाली है तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होगा। इधर है तो गॉज, GAUZ, गॉज। गॉज मतलब हाँ, बाहर ना निकले। नहीं ना, हम बताएंगे क्या दी, तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रहेगा, तुम अपना दिमाग लगाओ ना। गॉज का मतलब वायर मेश होता है, वायर मेश दिया ए में, जिसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस। बी में, in which tube would you expect to find the plant with the least amount of starch? हाँ हाँ, क्यों इसका वेट इंक्रीज हुआ, ये पूछ रही हो ना। इसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट। बी में क्योंकि इसको लाइट पूरा मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा मिल रहा है स्नेल के कारण। स्नेल रेस्पिरेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके इसके लिए अवेलेबल हो गया, तो मैक्सिमम सनलाइट भी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, तो इसीलिए इस केस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट। और फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, वेट इंक्रीज करने वाला या घटाने वाला? ग्रोथ वाला प्रोसेस है ना, इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए इट विल ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द ड्राई वेट ऑफ द पॉन्ड। पॉइंट पकड़ में आया? डाउट है तो पूछो त्रिशा। तो जब भैया जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज मिलेगा, जब ग्लूकोज मिलेगा तो उसको मतलब है कि वो ग्रोथ कर सकता है। जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ग्रोथ क्या करेगा? अच्छा, उसको जब ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज का करेगा क्या? या तो उसको इमीडिएट यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए, किस चीज के लिए वो एनर्जी का काम करेगा? ग्रोथ के लिए ही ना। और नहीं उसको अभी ग्रोथ करना है तो उसको स्टोर करके रखेगा कि नहीं भाई अभी कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, स्टोर करके रखते हैं, जब कंडीशन फिर अच्छा होगा तो उसको ब्रेक डाउन करके अपना ग्रोथ करेंगे। दो ही ऑप्शन हुआ, लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा, उसका ओवरऑल मास जो है वो तो बढ़ेगा, है कि नहीं? पॉइंट समझे? So that is expect the greatest increase in the dry weight of the pond weed. Whether it will grow also, it will increase the weight. If it is stored in the form of starch also, it will increase the weight. Photosynthesis is a anabolic process. Anabolic यानी बनाने वाला प्रोसेस है,
कैटाबॉलिक यानी ब्रेक डाउन करने वाला प्रोसेस है. सो फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस. सिंथेसिस नाम में ही है, और रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन प्रोसेस है. इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस. तो इसीलिए अगर खूब रेस्पिरेशन हो और कंजम्पशन नहीं हो रहा है, खाना अंदर नहीं जा रहा है, तो उसका वेट लॉस होगा. और फोटोसिंथेसिस खूब हो रहा है तो उसका वेट गेन होगा, क्योंकि एनर्जी मिल रहा है, ग्रोथ होगा. इन विच ट्यूब वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ए प्लांट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टार्च? इधर कुछ नहीं हो रहा है, डार्क है, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा. द ट्यूब इन विच मोस्ट ऑक्सीजन वुड बी इवॉल्व्ड? बी नंबर. सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रहा है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी यही रिलीज करेगा. द ट्यूब इन विच लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी फॉर्म्ड? ए में सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फाउंड. आप ए और ई को कंपेयर कर सकते हो. क्या लगता है किसमें आपको लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा? ए में. कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा ना, तो इसीलिए और कम हो जाएगा. द ट्यूब इन विच द प्लांट टू सर्वाइव फॉर द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ टाइम? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ टाइम प्लांट किस में सर्वाइव करेगा? ई में. क्यों? इसको लाइट नहीं मिल रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. नहीं पहुंचता. कैसे सर्वाइव करता है? जिस तरीके से हमने बताया, कैम पाथवे करके एक तो है जो कि रात में भी ऑक्सीजन देता है, इसमें मॉडिफिकेशन होता है, हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट this one. Okay, tomorrow's class we will